बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ। कहते हैं द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वाज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट द मुस्लिम्स आर एन इंडिपेंडेंट नेशन। Any attempt to merge their national and political identity will be strongly resisted. पैराग्राफ नंबर 3 के डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग और उनके सिनोनिम्स। फर्स्ट वर्ड क्या है? आइडियोलॉजी, नज़रिया, मॉडल, स्टैंडर्ड और यू कैन से पैरागॉन। द नेक्स्ट वर्ड इज फंडामेंटल, बुनियादी, बेसिक, प्राइमरी। प्रिंसिपल, असूल, रूल, ट्रुथ और यू कैन से परसेप्ट। द नेक्स्ट वर्ड इज इंडिपेंडेंट, खुद मुख्तार, लिबर्टी। मर्ज, मदगम करना, कंबाइन, यूनाइट, ज्वाइन। नेशनल, कौमी, वननेस, डिस्टिंग्विश। पॉलिटिकल, सियासी, डिप्लोमेटिक। स्ट्रांगली, शिद्दत से और यू कैन से फिर्मली। डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग को पढ़ने के बाद अब हम इसकी बामुहावरा ट्रांसलेशन करते हैं। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वाज बेस्ड, नज़रिए पाकिस्तान की असास थी, बुनियाद थी। ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल, इस बुनियादी असूल पर, दैट द मुस्लिम्स आर एन इंडिपेंडेंट नेशन, कि मुसलमान एक खुद मुख्तार कौम है, यानी कि एक आज़ाद कौम है। The ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that the Muslims are an independent nation. नज़रिए पाकिस्तान की असास इस बुनियादी असूल पर मबना थी कि मुसलमान एक अलग खुद मुख्तार कौम है। Any attempt to merge their national and political identity, इनकी कौमी और सियासी पहचान को ख़त्म करने की कोई भी कोशिश will be strongly resisted, कि पुरजोर तरीके से मुज़ाहमत की जाएगी। Any attempt to merge their national and political identity will be strongly resisted, उनकी कौमी और सियासी पहचान को ख़त्म करने की किसी भी कोशिश की पुरजोर तरीके से मुज़ाहमत की जाएगी। ये कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पाकिस्तान के बारे में ख़यालात थे। ट्रांसलेशन के बाद अब हम इसकी सिंपल इंग्लिश पढ़ते हैं। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वाज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट द मुस्लिम्स आर एन इंडिपेंडेंट नेशन। सिंपल इंग्लिश क्या है? कायदे आज़म सेड दैट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वाज बेस्ड ऑन द बेसिक प्रिंसिपल दैट द मुस्लिम्स आर अ सेपरेट नेशन। फंडामेंटल के लिए बेसिक का वर्ड यूज़ किया गया, इंडिपेंडेंट के लिए सेपरेट का वर्ड यूज़ किया गया और इसको सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया। नेक्स्ट है जी कि एनी अटेम्प्ट टू मर्ज देयर नेशनल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी विल बी स्ट्रांगली रेजिस्टेड। ही सेड दैट एनी अटेम्प्ट टू फॉर द एमर्जेंस ऑफ देयर नेशनल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी टू एनी अदर नेशन वुड बी स्ट्रांगली अपोज्ड। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट होता है।